Hello friends, welcome to the session LRDI, the final lab. My name is Swapnil. I am training students for the last 19 years and have taught more than 10,000 students. Fine. The agenda of this session is just to let you know how do we score the desired percentile in actual CAT exam. Basically, how do we approach the paper, how do we examine the questions, how we can solve two sets which is sufficient to score 99 percentile in most of the cases. Am I right? So, agar last year ka paper dekhen, it was like 99.2, 99.3 percentile if somebody could solve two sets completely. That means 30 marks, around 30 marks. Am I right? So, इस session का agenda यही है. हम questions देखेंगे last year का. I have taken a slot 3 paper LRDI section. So, we'll be selecting two sets out of those 4 sets and we'll try to solve those two sets within 40 minutes time, so that we can understand and how we approach the paper and what kind of areas from where we can start the question, how do we handle the complexity of the information and everything, so that I can score 30 marks, or I would say 99 percentile in other sense. Fine. So there are a couple of sets which we'll be reading first. Fine. This is the set number 1. There are only 3 female students, Amla, Kohli and Rini, and only 3 male students, Biman, Matthew and Shamal. In a course, the course has 2 evaluation component, project and test score, and the aggregate score in the course is a weighted average of the 2 components, with the weights being positive and adding to 1. The project are done in 2 or group of 2, with each group considering or consisting of a female and a male student. Both the group member obtain the same score in the project. The following additional facts are known about the scores in the project and test. Fine. So basically some number crunching needs to be done. So if you have practiced such kind of a question, you can definitely start with the set. Let's see the other set. Let's examine the sets beforehand so that we can select the set appropriately. Am I right? This is the second set. In a coaching class, some of the students register online and some other students are registered for offline coaching. No students register for both the offline and online coaching. Fine. And hence the total registration number of some of the students in online and offline registrations. Fine. The following facts of in the table pertain to these registration numbers for the 5 months, January to May. Again, so let's just read the couple of statements beforehand. In every month, both online and offline registrations number were multiples of 10. Fine. So again, we can have an idea that information is not complex. The data is almost ending in 5 statements. Fine. And minimum, median and maximum is given. So again, the number crunching game is here. Fine. Let's read one more set. An air conditioner AC company has 4 dealers, D1, D2, D3, D4 in a city. It is evaluating sales performance of these dealers. The company sells 2 variants of the ACs, window and split. Both these variants can either inverter type or non-inverter type. It is known that total number of ACs sold in the city is fine. So the some numbers are there, 2 type of ACs are there. Fine. And window AC, split AC, inverter, non-inverter, and again 4 dealers and stuff. Fine. And if I look at the information, there are 7 statements given in this particular question. So very unlikely I'm going to start with this particular set. Fine. So let's leave. Let's see the next question. A, B, C, D, E, F are 6 police stations in an area which are connected by a street as shown below. 4 teams, team 1, team 2, team 3, team 4 patrol these streets continuously between 9 hours and 12 hours each day. Again, so it's like basically network. We have to manage the network and the data information given. In such question, lot of analysis and everything is required. So this is not probably the first set I'll start with. Fine. So I'm going to start with the very first set, which is the set number 2, based on online and offline coaching, to have the idea that how we can approach this set. And agar मैं set को within 20 minutes खत्म कर पाता हूँ, तो I'll be having a chance of approaching other set as well. Right? So let's start with the second set. This information I'll take to the next page. In a coaching class, some students register online and some other students registered offline. No student registered both online and offline. Okay. Hence, the total registration number is the sum of the online and offline registrations. Fine. The following facts are in the table pertain to these registration numbers.
for the 5 months January to March 2023. Okay, so this is the information which is telling us that January to March, 5 months. I'll write the 5 months here. January, February, March, April and May. Fine. And there is online and there is offline, and this is total. What I know that numbers are given. So if I look at the table first hand, I know minimum value is 40, maximum value is 100, median number is 80. So there are a couple of numbers which are going to be more than 40, 80 and 100, more than 40 and less than 80, something like this. Fine, because 80 median hoga to beechon beech aayega. Fine. Similarly, I can say this is minimum 30. Fine. Maximum is 80 and minimum is 50 again. And same goes for the total score or total enrollments basically, which is minimum is 110 and maximum is 130 and median is 120. So these numbers are very close. I mean these two numbers can be, अगर मैं बात करता हूँ तो 110 भी हो सकते हैं, 120 भी हो सकते हैं, 120, 110. मतलब यहाँ पर जो नंबर आएंगे इनमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, सो कम पॉसिबिलिटीज निकलेंगे, है ना. सो दैट्स व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व. फाइन. What else do we have in terms of information? Nothing. We know that these are the information. This is the information given in the table. 100 लोग मेरे पास मैक्सिमम है, 40 लोग मेरे पास मिनिमम है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में, और मैक्सिमम मीडियन लोग कितने हैं 80. फाइन. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. Now, very important piece of information this kind of question is that 40 has to be the part of the counting, 80 has to be the part of counting and 100 has to be the part of counting. क्योंकि कोई नंबर मैक्सिमम है मतलब ऐसा किसी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ ही होगा. Is that okay? Fine. So what else do we have? The table shows the minimum, maximum, median registration numbers of these 5 months separately for online, offline and total number of registrations. The following additional facts are also known. In every month, both online and offline registration numbers were multiple of 10. Okay, so again a very important piece of information. Fine. So every number has to be multiple of 10. That is perfect. What else? In January, the total number or the number of offline registration in January, the number of offline registration was twice. It is twice that of the number of online registration. तो यहाँ पर A हुए होंगे, है ना. अगर यहाँ पर A हुआ है तो यहाँ पर कितना हुआ होगा, 2A हुआ होगा. फाइन. दैट मीन्स टोटल कितना हुआ होगा, 3A हुआ होगा. Perfect. Now if you look at the numbers, this is very simple to identify as of now, because if you look at the numbers are multiple of 10. यहाँ पर भी 10 का मल्टीपल आएगा, यहाँ पर भी 10 का मल्टीपल आएगा, यहाँ पर भी 10 का मल्टीपल आएगा, हर नंबर 10 का मल्टीपल होगा. सो दिस इज 3A एंड 3A होने के साथ साथ ये 10 का मल्टीपल भी है, इसका मतलब 3 का मल्टीपल भी है और 10 का मल्टीपल भी है. फाइन. 30 का मल्टीपल. सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? 110 नहीं हो सकता, 130 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. द ओनली नंबर आई कैन फिट हियर इज 120. So this is directly we are getting information here. We can fill this information directly in the table. This is 130 or 120 in fact. So this will be equal to 40. This will be equal to 80 and this will be equal to 120. Okay, fine. What else do we have? In April, the number of online registration was twice that of offline registration. The similar data we have. So it has to be 80 in fact. This has to be 40. This is 80, this is 40, this is 120. This is what we have as of now. Very simple data to fill. Directly we can fill this information from the given statements. Fine. The number of online registration in March. The number of online registration in March. Fine. Was twice that of offline registrations. The number of online registrations in March was same as the number of offline registrations of February. Fine. So यहाँ पर अगर number X है let's say, तो यहाँ पर भी नंबर क्या आएगा, X. दिस इज व्हाट वी हैव. सो दिस इज जनवरी, फरवरी, मार्च में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो फरवरी के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के बराबर है. फाइन. तो यहाँ पर दोनों नंबर सेम लिखने हैं मुझे. ओके. व्हाट एल्स डू वी हैव? द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाज द लार्जेस्ट इन मे. सो मे में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का नंबर है हाईएस्ट, दैट इज 100. दैट हैज टू बी असाइन टू मे. सो दिस इज 100.
Fine. Now, after getting this kind of information, I know this is 100 and this number has to be less than 130 or equal to 130 because 130 इसका maximum value है. तो अगर यहाँ पर आप 30 लिखते हो तो 130 आ जाएगा. यहाँ पर अगर मैं 40 लिखता हूँ तो ये 140 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है. सो इन नटशेल आई कैन से इफ आई लुक एट ऑफलाइन का सबसे छोटा वैल्यू कितना है 30. तो यहाँ पर मैं मिनिमम वैल्यू 30 लिख सकता हूँ. इट कैन नॉट बी 20 बिकॉज 20 अवेलेबल नहीं है. इट कैन नॉट बी 40 क्योंकि यहाँ पर 140 हो जाएगा जो फिजिबल नहीं है. सो यहाँ पर इकलौता कॉम्बिनेशन बनने वाला है 130. सो दैट विल मेक इट 130. अंडरस्टूड? परफेक्ट. So this is what we have. Now some sort of number crunching is needed here. X, these are the numbers which are same. I know that offline की अगर मैं बात करता हूँ, offline में मेरे पास 30 है, 50 है and 80 है. So what do we have here? 30 I have already used. Fine, this is already used. 50 is already not even. In fact 50 is still left. I'm left with 50 to be used. यहाँ पर 80 आ चुका है. तो this number has to be 40 by default. Fine, 30 से बड़ा एंड 50 से छोटा 40 हो सकता है. यहाँ पर मुझे एक नंबर लिखना है. फाइन, दिस नंबर कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी मोर देन 50, इट कैन बी इक्वल टू 50, इट कैन बी लेस देन इक्वल टू 80, इट कैन बी एनीथिंग. एम आई राइट? सो अगर मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर 50 आएगा. वन ऑफ दीज टू नंबर्स हैज टू बी 50 क्योंकि मीडियन 50 है. 50 अगर मीडियन है तो इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू 50 होना कंपलसरी है. 50 यहाँ पर आ सकता है. लेट्स एग्जामिन अगर 50 है तो आई नो यहाँ पर x की अगर मैं बात करता हूँ व्हाट कैन बी द रेंज ऑफ x. लेट्स सी इफ इट इज़ 50, x का जो अपर लिमिट है वो 80 हो सकता है. हाउ कम इट इज इट 80? क्योंकि अगर मैं इसको x को 80 रखता हूँ तो 80 प्लस 50 कितना होता है 130. इससे ज़्यादा तो टोटल ही नहीं है. इसका अपर लिमिट 80 हो सकता है. फाइन, हमारा राइट. x 80 से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि 80 से ज़्यादा अगर रखेंगे तो यहाँ पर नंबर 130 को क्रॉस कर जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. 130 हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है टोटल का, है ना. तो ये 80 नहीं हो सकता, 80 से ज़्यादा नहीं हो सकता. अच्छा, x कितना हो सकता है कम से कम? अगर ये 50 यहाँ पर मैं ले चुका हूँ तो यहाँ पर नंबर जो भी आएगा 50 आएगा या 50 से ज़्यादा आएगा. फाइन, अगर मैं यहाँ पर 50 लेता हूँ तो यहाँ पर भी 50 आएगा. 50 से छोटा तो हो नहीं सकता. तो ये टोटल कितना होगा 100. पर टोटल की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है 110, है ना. अगर मैं यहाँ पर 50 लिखता हूँ x को तो यहाँ पर भी 50 आएगा बिकॉज 50 से कम क्यों नहीं हो सकता क्योंकि मीडियन 50 है. तो ये नंबर जो है वो 50 से डेफिनेटली बड़ा होना चाहिए या 50 के बराबर होना चाहिए. फाइन, 50 लिख दिया हमने. तो अगर 50 लेते हैं, मान लेते हैं बेयर मिनिमम, तो 50 ये 50 प्लस 50 इज 100 एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज 100 से छोटा नंबर 100 हो ही नहीं सकता. 100 सबसे छोटा नंबर कौन सा यूज़ करना है मुझे 110. ये मिनिमम वैल्यू है. दिस व्हाट वी हैव एज ऑफ नाउ. इसका मतलब जो x होगा वो 50 नहीं हो सकता, या तो वो 60 होगा या 60 से बड़ा होगा या फिर 80 होगा और 80 से छोटा होगा. डू यू एग्री विद दिस? आई हैव एस्टैब्लिश्ड इट. अगर ये 80 होगा तो ये 50 होगा, ये 130 होगा. अगर ये 60 होगा तो ये 60 होगा, ये 50 होगा, ये 110 होगा. इसके बीच में वैल्यूज आने की पॉसिबिलिटी है मेरे पास. अगर मैं x को 60 लेता हूँ फॉर द टाइम बीइंग तो ये भी 60 आएगा, है ना. 60 आ गया मेरे पास, 40 हो गया, 80 से एक छोटा नंबर 60 हो गया. फाइन. अब 80 से बड़ा नंबर मैं अगर यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कोई भी नंबर, फाइन, तो मुझे मालूम है कि जो भी नंबर आएगा वो 80 से बड़ा होगा. आई कैन नॉट इवन राइट 80. टेल मी वाई. इफ इट इज़ 80 तो 80 भी नहीं लिख सकते. तो 80 प्लस 60 कितना हो जाएगा 140. एम आई राइट? 140 इज नॉट द टोटल वैल्यू. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. तो अगर मैं यहाँ पर x 60 ले रहा हूँ, 60 लेने से मेरे पास 60 80 से छोटा है. तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो 80 के बराबर या 80 से बड़ा होगा, है ना. यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे हम 80 के बराबर होगा क्योंकि मीडियन है 80. मीडियन मिडिल मोस्ट नंबर होता है. तो 80 से बड़ा नंबर आएगा यहाँ पर या फिर 80 के बराबर नंबर आएगा, है ना. 80 तो मैं लिख ही नहीं सकता बिकॉज 80 प्लस 60 कितना होता है 140, जो कि प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है. तो x कैन नॉट बी 60. अंडरस्टूड? ठीक है, x 60 नहीं हो सकता. व्हाट एल्स डू वी हैव? क्या x में 80 ले सकता हूँ? मैं दोनों एक्सट्रीम केस एग्जामिन कर लेता हूँ. अगर दोनों ही नहीं सकते तो ऑब्वियसली 70 भी नहीं आएगा. 80 यहाँ पर 80, तो 80 कितना हो गया मेरे पास? यहाँ पर नंबर लिख दिया मैंने 80.
let's say this is 80. Fine. Now, if it is 80, 80 plus 50 कितना होता है? 130. फाइन. यहाँ पर 120 मुझे यूज हो चुका है, 130 मिल चुका है, 120 मिल चुका है, 130 मिल चुका है, तो इसका वैल्यू डेफिनेटली कितना होना चाहिए? 110. दिस हैज टू बी 110 बिकॉज 110 तो मिनिमम वैल्यू है ना. पर 110 अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा? 30. यस. अगर मैं यहाँ 30 लिखता हूँ तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू कितना है ऑफलाइन का? 40. मिनिमम वैल्यू कितना है? 40. तो इट कैन नॉट बी लेस देन 40, तो 30 नहीं आ सकता. इसका मतलब ये दोनों ही केस 60 और 80 पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली 17 के बीच में आएगा, वो पॉसिबल नहीं होगा. लेट्स फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्जामिन इट. हाउ डू वी अप्रोच इट? लेट्स सी. सो इफ आई से दिस इज 70, this has to be 70. So this is 120. Now it is 120, this has to be 110. By default, I just told you this is the minimum value. So it will become 40. Now this seems absolutely fine. Fine. Because आगे सब कुछ सम बैठ रहा है. But if you look at the median value, 80 is median. And 40 is smaller than 40 is already used here. 40 again, second 40 is smaller than 80. And ये जो 70 आया है वो भी किससे छोटा है? 80 से छोटा है. तो यहाँ पर कोई नंबर मेरे पास बचा ही नहीं लिखने के लिए. So again, the 70 case is not feasible here. I have just made sure that you are able to understand everything. Otherwise कोई एग्जामिन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. किसी भी रेंज का मैक्सिमम मिनिमम भी अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसके बीच का वैल्यू सेटिस्फाई करने के चांसेस नहीं है. ओके, दिस व्हाट वी हैव. व्हाट आई कैन से हियर, दीज आर द नंबर्स. फाइन. सो यहाँ पर 50 नहीं आ सकता, यहाँ पर 50 नहीं आ सकता, ये मैंने एग्जामिन किया था. तो अब यहाँ पर 50 लिख लेते हैं एंड वी आर डन विद द सेट. सो इफ आई से दिस इज 50, फाइन, दिस इज 50, दिस मस्ट बी 50. अग्रीड. ओके. तो यहाँ पर मेरे पास 80 से छोटा नंबर एक और आ गया है 50. यहाँ पर मैं 80 या 80 से बड़ा नंबर लिख सकता हूँ. द प्रॉब्लम इज आई कैन नॉट राइट मोर देन 80 बिकॉज 80 से बड़ा नंबर लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ पर लेट्स से मैंने 90 लिख दिया. तो 90 प्लस 40 कितना होता है? 90 प्लस 50 कितना होता है? 140. इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 130. सो इट हैज़ टू बी what? 80 alone. That is a lone possibility. I have to write a number which can fit here. So that can be more than or equal to 80. I cannot take more than 80 because summation 130 को cross कर जाएगा. Yes? So this will be 130. Perfect. Now यहाँ पर मेरे पास 110 अभी तक अवेलेबल नहीं है. So this is 110. Now if this is 110, this is 50. So obviously this has to be 60. Is it fitting the arrangement? Let me check. It is fitting definitely the arrangement. How come? Let's say this is 50. I have to erase. Fine. What are the numbers we have used here? 30 we have used. 40 we have used. 80 is already given to us maximum value. 50 is the median value which I have taken care. यहाँ पर क्या जाएगा? 60, which is perfectly all right. And in the similar scenario, we can fill this total वाला arrangement also. यहाँ पर 110 है. Fine. यहाँ पर 120 है, यहाँ पर 130 है. 130 I'm going to get twice. Fine. And 120 I'm going to get twice. Okay. So this is the final tally of the enrollments I have. Now let's answer these questions one by one. What was the total number of registration April? April में registration कितना है? 120. Perfect. Fine. 120 है अप्रैल में रजिस्ट्रेशन. इज दैट ओके? फाइन. व्हाट एल्स डू वी हैव? व्हाट वाज द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन जनवरी? जनवरी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कितना है? ऑनलाइन है ऑफलाइन है? लेट्स कंप्लीटली कंफर्म. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन 40. फाइन. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन जनवरी, दिस इज 40. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी ट्रू? द नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन was smallest in May. Offline registration was smallest in May. That's true. The total number of registration was the smallest in February. February में smallest नहीं है, February में highest number it is 130. This is not true. So what is my answer? Only first statement is true. Fine. What best can be concluded about the number of offline registration in February? Offline registration in February.
This is 50, exactly 50. Answer is 4. Which pair of the month definitely had the same total number of registrations? Same total number of registrations. If I look at January and April, it is same. That is perfect. And February and May, they have 130 each. So this is again okay. So fine. So both the statements are true. So my answer is both the statements. That is 4th. Fine. So this is all about the second set. Let's move to the first set. We just skipped. Fine. Again, the question which is based on number crunching. I personally like number crunching, and I am sure you must have practiced these type of questions a lot. So let's start with the question. Let's take this question to the other slide. There are only 3 female students, Amala, Kohli and Rini, and there are 3 male students, Biman, Matthew and Shamal. Fine. So in a course, the course has 2 evaluation components, the project and the test. The aggregate score is the weighted average of the project as well as the test. Okay. That means 2 components. And with weight being positive and adding to 1. So what exactly is happening here? The project score and the test score are considered in a fashion that, let's say somebody is scoring 40 marks in project and 60 marks in test, and उसका यहाँ पर अगर weight का summation जो है वो 1 है, मतलब इसका weight अगर 0.4 है और इसका weight अगर 0.6 है, तो aggregate score कैसे निकाला जाएगा? Aggregate score will be calculated 40 into 0.4 plus 60 into 0.6. That's how aggregate score will be calculated of that person. 40 into 0.4 is 16 and 60 into 0.6 is 36. That will make it 52. That's how aggregate score will be calculated. Are you getting this point? Fine. So weights are positive and summation of the weights is 1. There are 2 components, project and test. So somebody's composite score will be calculated on the basis of the weighted average of test score and the project score. Fine. So this is what we have. Now the project are done in groups of 2, with each group consisting of a female and a male student. That means group में female student है और एक male student है. These are female students, these are male students, that is mentioned. Both the group members obtain the same score in the project. That is a very important information. That's what we have to understand. Let's say अगर मैं बोलता हूँ एक ग्रुप में 2 लोग हैं, तो इन दोनों का स्कोर x आएगा, दोनों का स्कोर y आएगा, इन दोनों का स्कोर कितना आएगा? z आएगा. They'll be scoring same marks. That's what we have in this statement, है ना? So let's move ahead. Let's figure out what else is given. The minimum, maximum and the average of project and test score was 40, 80 and 60. Now let's understand what is given in the statement. Let's make a table out of it. Fine. The information we have has to be put into the table. Fine. The components are like this. There are people who are taking test. There are people who are taking projects, and the projects are done in the group of 2. Okay. This is what we have. So my job is to fill this table as per the requirement of the question. Fine. So there are people, name of the people is A, this is K, this is R. I'm taking their first letter of the name. B, because all of them are different. That is M, and that is S. These are females and these are males. So this is a project, this is test, and this is aggregate score. That's what we have here. Fine. So अगर इसका weight x है, तो इसका weight कितना होगा? 1 minus x. Summation is given to us, which is 1. Fine. Now important information is there that both the people who are participating in a project will be scoring the same marks. Score दोनों का same है, और हर project में एक male है और एक female है. तो अगर male का score 40 है, तो female का score भी 40 होगा. किसी का score अगर 60 है, तो दूसरे पार्टी का भी score 60 होगा, और 80 score है तो 80 score भी होगा. Now what do we have in this statement? That these scores are like this only, that minimum score of the project is 40, maximum score is 80, and the average score is 60. So somebody must have scored 40, somebody must have scored 80, and somebody must have scored 60. That is what we have in terms of the scores which is given in the statement. तो
तो अगर 40 किसी का आया है, 60 किसी का आया है, 80 किसी का आया है, तो उसके पार्टनर का भी स्कोर 40 ही आया होगा बिकॉज दोनों का स्कोर सेम है। 60 अगर किसी का स्कोर है तो इसका स्कोर भी 60 होगा क्योंकि दोनों का स्कोर सेम है। 80 किसी का स्कोर है तो उसके पार्टनर का स्कोर भी 80 ही होगा क्योंकि दोनों का स्कोर सेम है। सो व्हाट आई कैन कंक्लूड इन प्रोजेक्ट, scores are 40-40, scores are 60 and 60. Two people must be scoring, the partners will be scoring 60 as well, and two people will be scoring 80. That's for project that we have to keep in mind. Fine, because इनका स्कोर सेम है पार्टनर्स का, एक मेल है और एक फीमेल है. Fine, so male will be scoring 40, then female partner will also be scoring 40 marks. This is what we have here. And minimum score is 40, maximum is 80, and average is 60. So these are the score they must have scored. We need to use 3 score. These are the 3 scores given the question. The test score of the student will, students were all multiples of 10, that is okay. 4 of them were distinct and the remaining 2 were equal to the average test score. Now it is given कि जो test score है उसका भी value minimum कितना है 40, maximum average कितना है 60, और मैक्सिमम कितना है 80. Now it is mentioned that 2 of them scored the same marks which is average. So these are the number which we have already now. अच्छा, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, और डिस्टिंक्ट है स्कोर, किसी और का स्कोर 40 नहीं हो सकता, तो इसका स्कोर डेफिनेटली क्या होना चाहिए 50. इट इज़ गिवन दैट इट इज़ मिनिमम 40 है, तो उससे बड़ा स्कोर क्या होगा 50 होगा. फाइन, 40, 50 एंड द अदर पर्सन विल नॉट स्कोर 60 क्योंकि 2 ही लोगों का 60 है. बचे हुए 4 लोगों का स्कोर अलग है. तो 40, 50, 80 have already used, 60 is given to us, that has to be used twice, we have already used 60. तो इस पर्सन का स्कोर डेफिनेटली 60 से बड़ा होगा. कितना होगा 70. That is what we have. Do you agree with this? So these are the numbers which I am going to use. Okay, 40, 50 मेरे को नंबर इस्तेमाल करने हैं. नंबर डिफरेंट होने चाहिए. 4 numbers are different and 2 numbers are equal to the average. So this is 60 and 60, and the remaining 4 numbers are different. Minimum is 40 and upper limit is 70. So I know 40 से 80 तक अगर मैं नंबर लिखता हूँ, not 70 in fact 80. So 40 से 80 तक अगर मैं नंबर लिखूंगा तो 40, 50, 60 मैं यूज़ नहीं कर सकता, ऑलरेडी यूज़ हो चुका है. 70 और 80, this is the only possibility for test. This is what we have to establish. Once we understand that these are the scores I am going to get for test and project, I don't know who will get these scores, but if I know the scores, I can fill somewhat the information given in the table. Okay, let's move ahead then now. Amla's score in the project was double that of Kohli. Now that's very simple. Project के score की बात हो रही है. अमला का score कोहली से डबल है. डबल सिर्फ 2 ही नंबर मेरे पास अवेलेबल है, 40 एंड 80. सो दिस इज लोन पॉसिबिलिटी. अमला का स्कोर 40 होगा और कोहली का स्कोर कितना होगा 80. और मुझे मालूम है तीनों फीमेल हैं ना. तीनों फीमेल होने की वजह से इनके स्कोर्स की काउंटिंग हम कर सकते हैं. 140 इज यूज फॉर 1 फीमेल, 80 इज यूज फॉर 1 फीमेल. सो अदर फीमेल स्टूडेंट विल स्कोर 60 मार्क्स इन प्रोजेक्ट. फाइन, दिस इज व्हाट वी हैव. What else is given? Amla's score in the project was double that of Kohli in the same, and but Kohli scored 20 more than Amla in test. तो अगर यहाँ पर अमला का स्कोर A है तो कोहली का स्कोर कितना होगा A plus 20. Yet Amla had the highest aggregate score. तो अमला का स्कोर हाईएस्ट होगा, aggregate score which is 1, rank 1 basically. Fine. What else? Shamal scored the second highest in test. Shamal second highest लेता था स्कोर में, स्कोर उसका टेस्ट में सेकंड हाईएस्ट है. तो 70 स्कोर आया होगा शामल का यहाँ पर, सेकंड हाईएस्ट. फाइन, ओके. ही स्कोर्ड 2 मोर देन कोहली बट 2 लेस देन अमला इन एग्रीगेट. तो उसका कोहली से स्कोर, अगर कोहली का इसका स्कोर अगर K है तो इसका स्कोर कितना होगा एग्रीगेट स्कोर. इफ द एग्रीगेट स्कोर इज K हेयर, तो इसका एग्रीगेट स्कोर कितना होगा K-2, और इसका एग्रीगेट स्कोर कितना होगा K+2. परफेक्ट. फाइन. बिमन स्कोर्ड सेकेंड लोएस्ट इन द टेस्ट. सेकेंड लोएस्ट इज 50. सो बिमन का टेस्ट में 50 स्कोर आया होगा. अगेन वन ऑफ द नंबर इज यूज्ड हियर. एंड द लोएस्ट इन एग्रीगेट, एग्रीगेट में उसका रैंक क्या रहेगा 6, इवन लेसर देन K-2. ओके. मैथ्यू स्कोर्ड मोर देन रिनी. रिनी का स्कोर 60 है यहाँ पर. फाइन. मैथ्यू स्कोर्ड
मोर देन रिनी इन प्रोजेक्ट, तो रिनी का यहाँ पर स्कोर 60 है, तो मैथ्यू का स्कोर कितना होगा 80. क्लियर, परफेक्ट, फाइन. एंड बट लेस देन हर इन टेस्ट, तो टेस्ट में उसका स्कोर रिनी से क्या होगा, कम होगा. इसका मैथ्यू का यहाँ पर 80 तो नहीं आ सकता, फाइन, क्योंकि अगर 80 आएगा तो रिनी से कम किसी हालत में नहीं हो सकता. फाइन, सो मैथ्यू मस्ट बी स्कोरिंग, कैनॉट स्कोर 80, दैट मीन्स मस्ट बी स्कोरिंग इधर 40 or must be scoring either 60. Understood? That's what we have. 80 स्कोर हो चुका है. बिमन का स्कोर 80 और 60 में से कुछ होगा, एंड श्यामल का स्कोर 80 ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो 40 और 60 में से कुछ होगा. यहाँ पर स्कोर कितना आएगा 60 और 40, इनफैक्ट नॉट 80, 60 और 40 में से कुछ. 80 और इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड हियर. This is the information I have from the given data. The only point I'm left with is to use that इसका score का difference अगर मैं देखता हूँ weighted average. If I look at the weighted average, how do we calculate weighted average? I just explained by taking an example. अगर मुझे अमला का weighted score निकालना है, aggregate score निकालना है, so that will be equal to 80 into x, 80 into x plus a into x. In fact 1 minus x, that is her aggregate score. और उसमें से अगर मैं कोहली का aggregate score माइनस कर देता हूँ, which is 40 into x plus a plus 20 into 1 minus x, that should be equal to 4. This is 80x minus 40x. 80x minus 40x is 40x plus a into 1 minus x, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा a into 1 minus x and minus 20 times of 1 minus x, which is equal to 4. So a into 1 minus x cancel हो गया. This is 40x plus 20x minus 20 is equal to 4 plus 20x minus 20 is equal to 4. This will tell us 60x is equal to 24. So x is equal to 24 by 60, 24 by 60. You can cancel these two numbers. This is 2 by 5, which is 0.4. Once we figured out this, the question is now more or less done. Just have to, do cosmetic effects. So this is x is 0.4. This is 0.4. इसका weightage कितना है 0.4. So it must be 0.6. टेस्ट कंपोनेंट का वेटेड जो वेट है वो 0.6 है और प्रोजेक्ट का 0.4 है. फाइन, सो दिस इज व्हाट आई हैव हियर. नाउ व्हाट आई कैन डू हियर, आई मीन इफ आई लुक एट द नंबर्स, a can be 40, a cannot be 80. If it is 40, if I say this is 40, this has to be 60. Fine, 40 and 60. Now, the only thing which is threatening this Amla to be the highest is, if I look at the aggregate score for that Amla in this case, Amla का score इस case में कितना निकलेगा? If I look at this 80 into 0.4, 80 into 0.4 is 32, and 40 into 0.6 is 24. That will make it 56. Fine. And if I look at Shamal's minimum score even, minimum can be in the case of 40. So 40 into 0.4, 40 into 0.4, which is 16, and 70 into 0.6, 70 into 0.6 is 42. That will make it 58. That means in this scenario, श्यामल का स्कोर एग्रीगेट अमला के एग्रीगेट स्कोर से क्या है, ज़्यादा है. इसका मतलब अमला का जो स्कोर होगा टेस्ट में, that cannot be equal to 40. Okay, so let's understood the point, because अमला का रैंक फर्स्ट होना चाहिए था ओवरऑल एग्रीगेट स्कोर में, जो कि उससे
ज़्यादा है किसका, इवन द वर्स्ट केस सिनेरियो अगर मैं 40 भी लेता हूँ श्यामल का स्कोर, तब भी इसके अमला के स्कोर से ज़्यादा निकल के आ रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल. दिस कैन नॉट बी 40. ना दिस कैन नॉट बी 40, दिस ए कैन नॉट बी 80 क्योंकि 100 हो जाएगा फिर a + 20. अगर a 80 होगा तो a + 20 100 हो जाएगा, नहीं हो सकता. 40 हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली क्या होगा 60. जैसे ही ये 60 हुआ, फाइन, ये कितना हो जाएगा 80. ओके, तो ये दो नंबर्स मेरे पास पता चल गए. ए कितना हो सकता है, 40 नहीं हो सकता क्योंकि अमला का स्कोर उसमें एग्रीगेट 1 रैंक पर नहीं होगा उस सूरत में. फाइन. और अगर ये 80 होता है तो ये 100 हो जाएगा, जो नहीं हो सकता. इसका मतलब दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी आई हैव. फाइन. आई कैन फिगर आउट द एग्रीगेट स्कोर एज वेल. दिस इज द एग्रीगेट स्कोर k + 2 k - 2 वी कैन easily find out, and the k will look at it later on. 80 into 0.4, 80 into 0.4 is what, 32. If I look at the Amla's score, 80 into 0.4, which is 32. Fine. And the other number is 60 into 0.6 is 36. So total score is 68. This is aggregate score of Amla. 40 into 0.4 is 16. And 80 into 0.6 is 48. Fine. 80 into 0.6 is 48. 40 into 0.4 is 16. Am I right? So that is 64. Exactly the difference we were looking for. And this number has to be k. This was, 2 more than this and 2 less than this, we know. So this has to be 66 by default. Because कोहली जो श्यामल है उसका स्कोर, ही स्कोर 2 more than कोहली. श्यामल स्कोर 2 more than कोहली. सो 66 बनाने के लिए 40 into 4 अगर मैं लेता हूँ, 40 into 4, फिर 40 into 0.4 प्लस 70 into 0.6, this is 16, and this is 70 into 0.6. We just did in the previous question. It was coming out to be 58. This was the possibility. फाइन. सो 58 कहाँ आ गए, 42 और 16 का समेशन 58 होगा, जो पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब इसका स्कोर 40 नहीं हो सकता. तो ये 40 नहीं होगा तो ये डेफिनेटली क्या होगा 60. दैट इज द लोन पॉसिबिलिटी. वी कैन इरेज दिस नंबर नाउ. दिस इज 60. नाउ इफ दिस इज 60, द अदर पर्सन कैन नॉट स्कोर 60 क्योंकि सबका स्कोर एक ही बार इस्तेमाल होना है. यहाँ पर मेरे पास मेल का 80 यूज़ हो चुका है, मेल का 60 यूज़ हो चुका है, तो मेल का कौन सा स्कोर यूज़ होने वाला होगा 40. सो इट कैन नॉट बी 61 मोर टाइम. This is what we have. Understood? And इसका स्कोर कितना निकल के आ जाएगा एग्रीगेट 66. Fine. So 6, this is 24 and this is 42. Okay. So these are the numbers which we have. We can almost complete this table now. Fine. 40, 60, and these are the numbers. I mean, we have used what? 40, we have used 80. 40 यूज़ कर चुके हैं, 80 यूज़ कर चुके हैं, 50 यूज़ कर चुके हैं, 70 यूज़ कर चुके हैं. वन ऑफ द 60 इज़ ऑलरेडी यूज्ड. येस, 60 इज़ वन ऑफ द 60 इज़ यूज्ड. 40 मेरे पास कंप्लीटली यूज़ नहीं हुआ है. 40 अगर मैं यहाँ लिख सकता हूँ, फाइन, और 60 भी लिख सकता हूँ यहाँ पर सेकंड अगर मैं चाहूँ तो. बट वी नो दैट यहाँ पर जो मैथ्यू है, मैथ्यू का स्कोर यहाँ पर रिनी के स्कोर से क्या है, कम है. तो अगर मैं यहाँ पर नंबर लिखता हूँ मैथ्यू का स्कोर मोर देन रिनी इन प्रोजेक्ट एंड लेस देन हर इन टेस्ट, तो मैथ्यू का स्कोर यहाँ पर छोटा आना चाहिए. तो 40, 60 में से मेरे पास जो भी नंबर यहाँ पर लिखने के लिए है वो नंबर मैथ्यू के लिए छोटा होगा और रिनी के लिए बड़ा होगा. 40, 60 के अलावा कोई नंबर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर 60 आएगा और यहाँ पर 40 आएगा. फाइन. सो दिस विल कम आउट 60. विदाउट कैलकुलेटिंग द वेटेड एवरेज आई कैन से if the numbers are equal, whatever the weights they have, the total is going to be 60. Fine. Now let's calculate women's score. 40 into 0.4 is 60 and 50 into 0.6 is 30. That will make it 46, which is supposed to be the lowest. It is lowest. Fine. What else? 80 into 0.4 is 32 and 40 into 0.6 is 24. So that is 56. Okay, 32 plus 24 will make it 56. So these are the aggregate scores of each and every individual in the question. This is 60.
I'll write it outside because we have written everything outside. So this is 60. Fine. So we are done with the table. Fine. So we had to calculate the weighted average. Once we get the weighted average, it's very easy to find out the numbers. It's just, matter of time. We figure out what is to be done with the question. Is that okay? So let's answer the question one by one. What is Rini's score in project? Rini का score project में कितना था? 60 marks. Okay. What was the weight of the test component? Test component का weight कितना है मेरे पास? 0.6. Answer choice is 3. What was the maximum aggregate score obtained by a student? Maximum. किसकी बात हो रही है? अमला की बात हो रही है, which is 68. What was Matthew's score in test? Matthew ने test में कितना score किया है? 40. Which of the following pair of the students were the part of the same project? That means they have to be scoring the same marks. Amala and Biman. Amala and Biman. They cannot be the part of the same project because they did not score same in project. Those who were the part of the project, they must have scored same in project. Kohli and Matthew. Kohli and Matthew. They cannot be the part of the same project because इनका भी score क्या है? अलग अलग है. So answer is neither 1 nor 2. Fine. So this is what we have in this session. Obviously we'll be doing the remaining 2 sets in some other session. We don't have much of a time. Fine. So thank you for your participation. Thank you so much. Have a great day. All the best.